Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. Very good morning. Hope everybody's fine. Yesterday we had a class, but unfortunately, due to misunderstanding, I could not conduct the class because I thought that it is at 12 noon. But later, when I checked the timetable, that class was at 10 a.m. So that was the reason. That's why I could not conduct the class. So today we'll continue our lecture we left in our last lecture. I don't know where we were. I think we did this one where it's kind of yeah. Just give me a minute. So origin of our infrastructure beneath. We already discussed this one, right? Infra, Latin word definitions. Yeah, we discussed this one too. Most of infra is invisible. So we discussed this one. Building blocks. Yes. Okay, ID building blocks. These are very important building blocks for the infrastructure of information technology. So we already discussed this diagram. बेटा आवाज सबको आ रही है जी सर Okay, that's good. So let's talk all components or the blocks individually or one by one. The first block, if you will see here in this diagram, the processing information. So organization implement business processes. Every organization have different business processes. The process information means processing information according to their business to fulfill their mission or to fulfill their requirements. Why do they need to fulfill their requirements? Because their target is the mission. So to reach that mission or the vision. So different functions are used to manage this process. So every process is unique to the organization or is specific to the organizations. The process may varies organizations to organization. Process of information I'm talking. So for example, if an organization is the university, the information processing is different as compared to the business-oriented organizations. So when they are using applications or the softwares, it is clear that each business organizations, and each process creates the information. Of course, they create the information too, and they use the information too. हर organization information जरूर use करती है. It's not enough that they are just using the informations, but they are creating the information too. If you get an example of simple shop, they may use different machine learning algorithm to use the customer's informations for the better understanding of the business. Simultaneously, they are creating the data of the customer too. The customers are buying which products. Every time the data is stored in their system. So we can say that business processes create and use information to both things. Why they use information? Because to make their business beneficial, efficient, and they want to understand the need and the requirements of the customer. So you may have seen that in the fashion industry, lots of organizations, they display the clothes according to your requirement. Or the other example, maybe you're watching YouTube videos, okay? So they are showing the videos, YouTube is displaying the videos related to that videos you are watching.
So how it happens? Because they are reading your information. They are using your information that this man or woman or a student is interested in such kind of the videos. That's why they read your information, they read your mind, and they show you such kind of the things, right? ऐसे होता है कभी? नहीं होता? The next one is application building blocks. The applications is client side because the client or the customer users, they always use the applications. So they always run where they run, of course, at the end users platforms or the system or the device. For example, WhatsApp is some sort of the applications. It runs on your computer or even your mobile phone. So this is your mobile phone is the end user device. Even though you can use the WhatsApp on your laptop too, if you download and connect with your mobile WhatsApp, and then it will work. Office applications provide standard server based applications. Of course, few applications which are in office based, they may provide server based application. They need a server where they can be installed properly. So their data is must store in the server. और रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन वहाँ के सर्वर पे चलनी चाहिए या सिर्फ डेस्कटॉप पे चल जाएगी. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस ऑफ द एप्लीकेशंस कि कितनी वो हेवी एप्लीकेशन. So business specific applications are typically highly customized or the custom built. So this one is very important. What are this mean? They are very customized or highly custom built. Why they are customized? Because as per the requirement of the business, the application are being developed. That's why they are customized according to the business. जिस तरह का बिजनेस होगा, जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी उस बिजनेस की, उसी तरह की एप्लीकेशन बनेगी. So if you will observe in the market, every business have different application and very specific to that business. एक ही एप्लीकेशन को आप सबके लिए यूज नहीं करते. हाँ, कुछ एप्लीकेशन है जो जनरली बनी गई हैं, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की है जो वर्ल्ड वाइज यूज होती है, मगर हम उससे लो लेवल की बात कर रहे हैं. जैसे हमारी ERPs होंगे वो डिफरेंट चीज होती है, और यहाँ पे हम स्पेसिफिक छोटे लेवल की बात कर रहे हैं ताकि बिजनेस एप्लीकेशन जो है हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग सी होती है, वो कस्टमाइज बनाते हैं. कस्टमाइज का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर उसको उस तरह चीजें बनाना है. So the third one building block is application platform. We need platform to run our applications. We need Java servers if application is developed in Java. We need .NET servers. We need ASP.NET platform if application is developed in ASP.NET. Okay, so the application platform comprises the front-end server, application server, connectivity, and database. This platform is related with all these. Front-end server, जो सर्वर पे ये एग्जीक्यूट होगी, कहाँ पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, वो भी एक प्लेटफॉर्म होता है. Then the, of course, to execute that applications, there may be required an application server, then connectivity between servers and application and the client. Of course, database is there. एक database की application तो उसकी database होगी. जावा सर्वर जैसे में एप्लीकेशन सर्वर में आपका जावा सर्वर जैसे हो गया, because application is developed in Java, so we need in Java server to execute that application. ठीक, .NET का प्लेटफॉर्म है तो we need .NET platform and so on. So of course the component is there to manage all these platforms, that is platform management. Let's talk about a little bit application platform building blocks, because we discussed in previous slash different thing.
फ्रंट एंड एप्लीकेशन कनेक्टिविटी एंड डेटाबेस, इसको अलग अलग से हम डिफाइन कर लेते हैं. So what is the purpose of front end server? Front end server provides end user with the introductions to applications. The purpose of front end server is to provide the interactions of the applications to the end users. If you don't use the front end server, it will be not easy, or it would be unable to connect with the applications. So server is providing this opportunity. When you are using WhatsApp, of course, that is installed there on the servers. So servers provides you this opportunity that you can interact with the application. Presenting application screens and web server, web browser. So this is how you can receive the application on the web browser. For example, you're going to access the Google. What you will do, you will write the google.com. So वो कहाँ से retrieve हो रहा है google.com? When you write the google.com, then you press enter, then the request is sent to the server. वो server क्या करेगा? फिर आपको respond करेगा. Server is the basic system which receive always the request from the client. वो system server होता है जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट रिसीव करता है और देन वो रेस्पॉन्ड करता है उस रिक्वेस्ट को, एंड दैट्स व्हाई यू सी द देन यू विल रिसीव द गूगल इज देयर ऑन द ब्राउजर या द फेसबुक. When you are writing the facebook.com, when you press enter, that request is sent to the server. ब्राउजर के जरिए वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और देन सर्वर वो रिक्वेस्ट को रिटर्न करेगा to the customer. So other one is the application server. It is a container running the actual application. ये application server is basically installed on the front end servers. जैसे as I told you that such kind of the servers can be Java server. अगर Java application है जो Java लैंग्वेज पे बनाएगी वो Java server उसको required होगा ताकि उसको execute कर सके, उसकी APIs को execute कर सके, उसकी connectivity को execute कर सके. That's why this sort of server is called application server. The other one is connectivity. File transfer protocol servers, ETL servers and ESB servers. ये क्या करते हैं? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट पे यूजर को सर्वर से टू डिफरेंट फीचर्स के साथ. जैसे फाइल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल हो गया जिसके जरिए यू आर एबल टू transfer the files through this connectivity. The last one is database provides a way to store the entire data. Some kinds of the applications look at the databases. For example, your WhatsApp, your Facebook, they look at databases. आप comments कर रहे हैं, आप post लगा रहे हैं, आप like कर रहे हैं, dislike कर रहे हैं. All these are stored in the databases. So I always say, use all these social websites securely. Okay, don't misuse them. So the last one is the infrastructure building block. If you will see this one is the highlighted infrastructure. The infrastructure contains around 6 components. So this one is the comprises on end user devices, maybe your mobile, maybe your laptop, maybe your desktop. Operating system, of course, without operating system, we cannot use mobile. Mobile पे Android operating system होता है, आपका laptop पे बेटा वो operating system होता है जैसे Microsoft का. Means processing. There should be processing. If there is no processing, how you will execute the things? Storage is there, networking is there, data center. ये सारी चीजें आपके infrastructure में आ जाती. So let's discuss them individually, one by one. So infrastructure building blocks, end user device, are the devices used by end users to work with the application. These are the customer side, user side devices. For example,
Your mobile is the end user device. Why we call them end user? Because we are the end user. We're going to use the applications such as WhatsApp. So device can be laptop, your PC, thin client, mobile device, and printer, etc. These are called the end user devices. The operating system और the collection, you know, operating system क्या different programs होते हैं, क्यों वो कंप्यूटर को मैनेज करते हैं कि को काम कर सके आप. अगर operating system है, computer will be unable to work. This is just an hardware. So operating system are collection of programs that manage a computer's internal working. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेसर्स को मैनेज करता है, डिवाइसेस को मैनेज करता है, फाइल सिस्टम को मैनेज करता है. These are the functionalities of the operating system to manage internal workings such as memory, जैसे आपकी रैम हो गई, रोम हो गई, और आपकी हार्ड डिस्क हो गई. प्रोसेसर एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जैसे आपके कंप्यूटर में किसी चीज को ओपन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ये आपका प्रोसेस होता है. कोई प्रोग्राम को ओपन करते हैं, कोई गेम ओपन करते हैं, वो प्रोसेसर के जरिए होता है. अगर प्रोसेसर नहीं है तो कंप्यूटर विल नॉट प्रोसेस. डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस को मैनेज करता है. आपकी ऑडियो डिवाइसेस को मैनेज करता है, वीडियो डिवाइसेस, आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे आपकी यूएसबी होगी, या फाइल सिस्टम्स. कंप्यूट compute basically physical and virtual computer in the data center. Computing power जहां पे वो compute कर सके. compute का मतलब होता है जो process. So ये इसका मतलब है हम आपको ऐसी devices required हैं infrastructure में जो compute कर सकें, जिसको हम सर्वर कहते हैं. वो फिजिकल भी हो सकते हैं, virtual भी हो सकते हैं in the data center. For example, virtual कैसे होते हैं? You are using the Facebook, but you don't know where it is installed. So वो क्या होता है? एक virtual server हो गया आपके लिए, because you don't know it. दूसरा वाली storage और system that store data. जैसे हार्ड डिस्क हो गई आपकी स्टोरेज के लिए, टेप्स हो गई, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग अटैच स्टोरेज हो गया, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये सारे स्टोरेज में होते हैं. क्योंकि ये चीजें सारी रिक्वायर्ड हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के. नेटवर्किंग, यू नीड डिफरेंट टूल्स फॉर द कनेक्टिविटी, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, फायरवॉल हो गए, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट एक्सेस, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये सारे नेटवर्किंग में आ जाते हैं. होपफुली आपने अभी पढ़ा होगा, या अगर ये चीज़ें नहीं पढ़ी राउटर स्विचेस, तो आप आगे जाके ज़रूर नेटवर्किंग सब्जेक्ट में ये चीज़ें कवर करेंगे कि ये चीज़ें क्या है. So data centers are locations that hold most IT infrastructure hardware. ये आपके सेंटर्स जहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आपके डिफरेंट हार्डवेयर लोकेटेड होते हैं. सारी चीज़ें आपके डेटा सर्वर्स हो गया, बिकॉज डेटा सेंटर्स मीन्स जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें स्टोर हो, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सर्वर स्टोर हो, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो, जहाँ पे आपके सर्वर्स पड़े हों, उनको हम डेटा सेंटर्स कहते हैं. ठीक है. So these data centers, they include facilities for uninterrupted power. So UPS, जैसे आपका UPS इनको डेटा सेंटर पे होता है कि भाई पावर बंद ना, अगर पावर बंद हो जाएगा तो एक्सेस में नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर यूजिंग योर व्हाट्सएप जहाँ पे स्टोर है, वो सर्वर बंद हो जाए तो यू वुड बी नॉट एबल टू एक्सेस द और यूज द व्हाट्सएप, क्योंकि उसका सर्वर क्लोज हो गया. इसलिए वो पावर को मेंटेन करने के लिए इट इज मैंडेटरी, दे मस्ट हैव यूपीएस सिस्टम. दे मस्ट हैव हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन सिस्टम, ये भी जरूरी है. हीटिंग सिस्टम होना चाहिए, वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, एयर कंडीशन सिस्टम होना चाहिए. ये सारी चीजें हों ताकि ये चीजें मेंटेन हो सके. ऐसा ना हो कि आपको पूरा सर्वर हीट अप हो जाए. व्हेन इट इज हीट अप,
वो काम करना छोड़ देगा. So a few years before, I was reading a report that I think Microsoft, if I'm not wrong, Microsoft or Google, because of the heating process, they dumped their server into the sea. They want to make it cool. Okay, when thousands, billions, trillions users are accessing one server at the same time, the server heat up तो होगा. When a server is heat up, of course मसला क्या होगा? Accessibility का मसला आएगा. वो slow हो जाएगा. हो सकता है उसके काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए. इसलिए they need this system, HVAC system. कंप्यूटर रैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कंप्यूटर रखे जाए, जहाँ पे सिस्टम प्रॉपरली मैनेज कीजिए. फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स इज इम्पॉर्टेंट, बट फिजिकली भी एक होते वर्चुअल सिक्योरिटी मेजर्स, दूसरा फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स. दोनों इम्पॉर्टेंट है. जैसे फिजिकली, जैसे आपकी फिजिक को सिक्योरिटी चाहिए भाई, जैसे आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो डेटा सेंटर के लिए भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए. ऐसा ना हो कि कोई चोरी कर ले, कोई डिस्क ले जाए, कोई सिस्टम खराब कर ले. ठीक है, आपकी बिल्डिंग्स मोर सिक्योर होनी चाहिए. आपका ऐसा ना हो कि आपका फ्लडिंग एरिया से सिक्योर होना चाहिए. दीज थिंग्स वी नीड टू सी. ओके, गिव मी 1 minute, आई एम कमिंग बैक. Hello everybody, I'm back. So these facilities were very important for the data centers. अगर यूपीएस नहीं है तो आपकी पावर शट डाउन होने का खतरा है किसी भी रीजन की वजह से. मींस डेटा सेंटर बंद हो गया तो इसका मतलब क्या है? यू विल बी अनएबल टू एक्सेस एनीथिंग. अगर HVAC सिस्टम नहीं है तो वो भी डैमेज कर सकता है. कंप्यूटर रैक्स नहीं है तो वो भी इशू है. फिजिकल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी वर्चुअल सिक्योरिटी होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट includes processes, IT infrastructure, library, and development and operations. ये दोनों फैक्टर्स IT infrastructure मैनेजमेंट में आता है. IT infrastructure library is very important where all the things required things are there, and development or operations. So development process and operations, different functions are also going to be managed through this IT infrastructure management. IT infrastructure, IM means IT
इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इंक्लूड्स टूल्स, किन टूल्स की वजह से मैनेज करता है, मॉनिटरिंग करता है, बैकअप रखता है और लॉगिंग करता है। ये 3 टूल्स हैं जिसकी वजह से ये जो 2 प्रोसेस ऊपर दिए गए हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, ये प्रोसेस को मैनेज करते हैं यूजिंग दीज 3 टूल्स। मॉनिटरिंग, एक मॉनिटरिंग जैसे सुपरविजन की जाती है, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज वर्किंग। बैकअप, डेटा का बैकअप रखा जाता है, जैसे आप लोग भी अपना बैकअप रखते होंगे। लॉगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ये भी एक टूल की तरह यूज होता है। Infrastructure building blocks are not per definition hierarchical related. वो इसका मतलब क्या है कि ये hierarchical नहीं है कि भाई पहले ये चीज हो, पहले ये चीज हो, पहले ये चीज। Doesn't matter. For instance, servers need both. एक ही टाइम पे सर्वर को नेटवर्किंग भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए। अब पीछे जाएं डायग्राम में तो यू मे क्लेम दैट, यहाँ पे देखें नेटवर्किंग पहले स्टोरेज है, बाद में नेटवर्किंग है एंड डेटा सेंटर्स। आपसे ये कहेंगे कि पहले स्टोरेज चाहिए फिर नेटवर्क, नहीं। सेम ये हायरार्की की का कोई मसला नहीं है यहाँ पे कि पहले कौन सी आएगी फिर कौन सी, नहीं। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लें तो सर्वर को दोनों चीज, नेटवर्किंग भी चाहिए और स्टोरेज भी चाहिए। नेटवर्किंग कनेक्टिविटी के लिए चाहिए, स्टोरेज डेटा स्टोर करने के लिए चाहिए। अगर नेटवर्किंग नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, अगर स्टोरेज नहीं तो डेटा स्टोरेज नहीं करेगा। ओके, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये दोनों। सो इसमें कोई हायरार्की नहीं है। सो डोंट माइंड अबाउट दी बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं डायग्राम में, कोई मसला नहीं। So up to yet we discussed different functional attributes. These were the, you can say that functional attributes: application, servers, आपकी processing power, platform, storage. So if you will see here, your right side of this diagram, we have 3 attributes: availability, performance, and security. हमने इसको अभी डिस्कस नहीं किया, but you may consider that these are not involved to any functionality of these building blocks. इनकी कोई proper functionality नहीं है। That's why इनको हम कहते हैं कि these are the non-functional. ये जो 3 attributes हैं right side, these are non-functional attributes, but they exist. But they are very important. Without these non-functional attributes, the functional attributes cannot work. Okay? Few experts, they said that it is not justifiable that we call them non-functional attributes. Few experts said that it would be better that if we call them qualitative attributes. Qualitative attributes means they maintain the quality of the system. Once we talk about non-functional attributes, maybe different things comes in our mind that these are not important overall because they are non-functional. But actually they are very important for the functional attributes. So let's talk a little bit about the non-functional attributes. Non-functional attribute describes the qualitative behavior of the system. Quality, yes, I told you that some experts say that we must call them quality attributes because these attributes are responsible to maintain the quality of the system. There can be many non-functional attributes. If you will read the chapter number 3 in the book, provided to you, there are many non-functional attributes. But the core non-functional attributes are availability, performance, and the security. If any system ignores any one of these 3, the system is not performing well. Availability is very important. Performance is very important. Security. Okay, we will discuss these 3 non-functional attributes later. So let's talk the importance of the non-functional attributes. How non-functional attributes are influential.
Example number one, when the infrastructure of a corporate website is not performing well. So then we are talking about the performance. अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट का काम सही तरीके से नहीं कर रहा, क्या होगा? The visitors of the website will leave, which has a direct financial impact on the business. किसी भी वेबसाइट को आप विजिट कर रहे हैं, इफ दैट वेबसाइट इज नॉट वर्किंग ड्यू टू रीजन, बिकॉज उनका सर्वर जो है वो डैमेज है, उसका सर्वर स्लो है, तो आप क्या कहेंगे? वो ब्राउजिंग में टाइम ले रहा है, 1 2 मिनट हो गए, ब्राउज नहीं हो रही वेबसाइट, व्हाट यू विल डू? यू विल लीव द वेबसाइट. ये परफॉर्मेंस आ गई. इफ परफॉर्मेंस, सो दिस वन इज, यू सी हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फैक्टर, परफॉर्मेंस. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. For other example, secure. For example, when credit card transactions are not stored in a secure way, आप ट्रांजेक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, अगर वो सिक्योर तरीके से स्टोर नहीं है, एंड एज और रिजल्ट लीक्स टू हैकर, अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि ये कोई हैकर हैक कर लेगा, द ऑर्गेनाइजेशंस that store the credit card data will have lot of explanation from the customer. एक बैंक है, आप उसके कस्टमर हैं, आप उसका एटीएम कार्ड यूज करते हैं, लेट सपोज आपको पता है कि ये बैंक सिक्योर नहीं है, आपकी पूरी डेटा आपके हैकर हैक कर रहे हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन के जरिए आपका बैलेंस भी वो हैकर्स वो क्या बैलेंस भी निकाल रहे हैं यूजिंग फेक आईडीज और फेक एटीएम कार्ड. आप क्या करेंगे? आप कंप्लेन करेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन, हमारे पैसे निकल जा रहे हैं, ये हैक हो रहा है, कोई बंदा हैकर हैक कर रहा है, ये सिस्टम सिक्योर नहीं है. सो व्हाट यू विल डू? यू विल लीव दैट बैंक. सो दिस इज आल्सो सिक्योरिटी is non-functional attribute. And availability, the third one is the availability. If you are using any website, if that website is not available, वो interruption आ रही है, आप एक्सेस कर रहे हैं, वो वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, किस टाइम है किस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसको यूज नहीं करो. क्यों? अवेलेबिलिटी. कस्टमर को 24 आवर्स अवेलेबल चाहिए चीजें. अगर फेसबुक 24 आवर्स अवेलेबल नहीं है, 1 घंटा ऑन है 1 घंटा ऑफ है, कभी हो रहा है एक्सेस कभी नहीं हो रहा है, व्हाट यू विल डू? यू विल, आप उसका अकाउंट छोड़ देंगे कि यार ये अवेलेबल ही नहीं है चीज, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ. इसका सिस्टम जो है पीछे से, इसका सर्वर का इश्यू है. दैट्स व्हाई यूपीएस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बताया था ना, यूपीएस पावर सिस्टम होना चाहिए, उसका कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि वो 24 आवर्स अवेलेबल हो विदाउट एनी इंटरप्शन. So I think this is enough for today's lecture. We will continue our lecture inshallah in next week in face-to-face class. Okay, inshallah next week we have face-to-face class. Inshallah we will continue because we have very few students today. Even only we have 9 students. Okay, students.